गुड इवनिंग पुणी थे वेलकम करुच्ची आम क्लास द कलिंग गल्प को आम पाखे किसी OSSSC इंग्लिश MCQ अच्छी जोटा सब एग्जाम रे तुम काम आसो सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन है ओके आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस तो पंक्चुएशन मार्क कोठी अछि एडा सब क्वेश्चन एग्जाम रे प्राय पडुची शी सेड आई एम टायर्ड ऑफ माय कंपनीज शेनानिगन्स तुम्हें फर्स्ट कथा जदि ये वर्ड जानना किसी असुविधा नहीं शेनानिगन्स यूजुअली यूज करा जाए जोठी तुम्हारा गुड ओके तो शेनानिगन्स यूज करा जाए जोठी हमें तुम्हारा प्रैंक्स कहि पार डिसेप्शन सही क्षेत्र रे कहि जाए प्रैंक्स डिसेप्शन डिसेप्शन समस्त बुझछ ना ट्रांसफॉर्मर तुम देखिछ डिसेप्टिकन्स थिले सेतरे नहीं कि जो माने देखिथिबो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी तो डिसेप्शन माने हमें काहा को ठकिबा को ट्राई करू तो से कहूची कि मु मो कंपनी रे जहा सब मो पिठी पछाडे होची बा किछि हिडन एजेंडा चालुची मु सेतरे टायर्ड एठाला सेंटेंस रो मीनिंग आ वर्तमान तुमको पंक्चुएशन मार्क देखबार अछि डायरेक्ट सेंटेंस अछि ता माने कॉमा रहिबो आ कोटेशन मार्क रहिबो एठी खाली कोटेशन मार्क अछि कैंसिल हे गेला एठी खाली कोटेशन मार्क अछि कैंसिल हे गेला एठी कॉमा और कोटेशन मार्क अछि राइट पंक्चुएशन कहिछि तने स्पेलिंग चेक करबार नाही ओके तापर कहिछि आई एम टायर्ड ऑफ माय कंपनीज शेनानिगन्स तुम्हें मन रखिबो कि फुल स्टॉप परे पुनी कोटेशन आसीबो कोटेशन परे फुल स्टॉप हबो नाही ठीक अछि तो एई सेंटेंस भी कैंसिल हे गेला सी इज द राइट आंसर ओके सी सेड कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट डायरेक्ट सेंटेंस है आ तुम्हारा पुनी फुल स्टॉप परे पुनी आउथरे कोटेशन मार्क आसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज गुड डैश प्लेइंग चेस ही इज गुड डैश प्लेइंग चेस तो गुड कोन हबो इजी क्वेश्चन है गुड एट कौन सी जिनस रे भलो थिले तुम इंग्लिश हे पारे तुमरो कौन सी स्पोर्ट हे पारे तुम कहि परबो गुड एट किंतु गुड विथ कोठी लागि जेमती जने कौन सी जिनस हैंडल करिवारे जेमती ही इज गुड विथ कंप्यूटर्स ही इज गुड विथ किड्स से छुआ मानन को संभाळिबारे एक्सपर्ट से क्षेत्र रे कहजिबो ही इज गुड विथ किड्स गुड एट किड्स नो है ठीक अछि किंतु कोन से स्किल थिले कोन हबो ही इज गुड एट प्लेइंग चेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन neither the teacher nor the students dash present in the class a neither nor either are not only but also ठीक अछि ए तीनटा टाइप रो जोटी तुमरो सेंटेंस जॉइन हेतिबो नीदर नॉर ईदर और तुमे एठी प्रॉक्सिमिटी रूल अप्लाई करिवो को रूल प्रॉक्सिमिटी रूल एठी देखो टीचर गोटे नाउन अछि स्टूडेंट गोटे नाउन अछि किंतु प्लूरल नाउन ता पाखरे जो वर्ब आसीबो सेटा प्लूरल वर्ब आसीबो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वेयर हला जति कि रूल कहली जे जो माने जानि थिलो तुमर रिवीजन हे गेला जो माने जानि न बहुत बढ़िया बे जानि परिबो तो प्रॉक्सिमिटी रूल हम अप्लाई करबा कोठी नॉट ओनली बट आल्सो नीदर नॉर ईदर और पाखरे नियरेस्ट तुम्हारा नाउन जोटा थिबो ताकू फॉलो करबा तुम्हारा वर्ब यदि एटा उल्टा हे हमता नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लास ठीक अछि टीचर पाखरे लागि थिले वाज लागि थांता स्टूडेंट्स पाखरे लागि छि बोले वे ओके एटा को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहै जाय ओके अच्छा पैराग्राफ क्वेश्चन प्राय बहुत एग्जाम रे आछि टीचरशिप वाला एग्जाम रे दुटा पैराग्राफ प्राय पढुछि मते लागुछि गोटे पैराग्राफ जदि भी पढला धर 4टा कि 5टा क्वेश्चन आसीबो पैराग्राफ आगे पढि कि टाइम वेस्ट करिवनी एटा तो छोटो पैसेज अछि पैराग्राफ comprehension can be even bigger ठीक अछि तो बेटर होछि skip to the questions देखिबो न आसिले पुनी फेरि कि आसीबो पैराग्राफ किबा क्वेश्चन रे जहा पचारिछि सही पार्ट को सर्च करे ट्राई करबो यदि गप्प भलिया पढिया पे बसिगला यू विल वेस्ट 5 minutes of your valuable time okay according to the passage what is the ultimate goal of effective teaching ये तो पुनी जो माने टीचरशिप एग्जाम दोछ तुमरो पाठरु ही एटा पडछि तनो तुमको तो ए पैसेज पढिया दरकार नथिले ओके टू हेल्प स्टूडेंट्स स्कोर हायर मार्क्स इन एग्जामिनेशंस टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स for life by developing independent thinking to complete the syllabus within time to make students memorize lessons effectively ए memorize lesson याकू हमें रट memorization कहू ना रट्टा मारिबा अर्थ रे अच्छा तो या भीतर कोटा कोन कहंती मोस्ट सेंसिबल लागुची टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ
by developing independent thinking. जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कौन कि पिला माने लाइफ टाइम प्रिपेयर हेबे मार्क रखिबेनी एटा तुम यदि एक्चुअली पढो ताले तुम ऑलरेडी तुम बाय हार्ट एटा तुम मन अछि किछि मन रखा दरकार नहीं कि पिला पाठ पढी के मार्क रखिबेनी पिला पाठ पढी खाली चाकरी पाइबेनी पिला पाठ पढी के लाइफ टाइम प्रिपेयर हेबे आउ तांकर थिंकिंग डेवलप हो जहा को तुम क्रिटिकल थिंकिंग भी तुम टीचरशिप कोर्स रे कहछ नहीं कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड a teacher promote in the classroom या भितर कोटा गोटे टीचर ता क्लासरूम रे प्रमोट करबा कथा डिपेंडेंस ऑन नोट्स एंड टेक्स्ट बुक्स पैसिव लिसनिंग एंड साइलेंट ओबेडियंस क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन एंड कोलैबोरेशन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंपटीशन तो एटा भी तुमरो बिना पैसेज पढी कि तुमे आंसर करि परिबो एटा हेबो क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन एंड कोलैबोरेशन राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज या भितर क्यों क्वालिटी को इंग्लिश लैंग्वेज जो मानकू टिके भी नर्वस लागुची क्वेश्चन देखि लागुची अरे बाप रे इतने बड़ बड़ ऑप्शन अछि छोटा ऑप्शन नहीं फास्ट मनरू से फोबिया को दूर करिया पड़ियो फोबिया माने फियर राइट तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज पय जो फोबिया अछि तुमर ताको दूर करिया पड़ियो डोंट थिंक ऑफ इट समथिंग लाइक एन एलियन लैंग्वेज ठीक अछि तुम्हें भाबो कि एटा तुम बहिरे अछि तुम्हें जेमिति ओडिया पढुछ सेमिति इंग्लिश पढिबो बुझिबो आ तुम स्ट्रांग हे जिबो सब्जेक्ट रे ओके तो इंग्लिश क्वेश्चन देखि नर्वस होबार नहीं लंबा ऑप्शन थिले छाड़ीबार नहीं बहुत क्वेश्चन तुम्हारा इजी इजी आसे ओके तो एटा हबो तुम्हारा कोन हबो हमें चाइल्ड को कोन करिया पई प्रमोट करबा कि ता माइंड रे क्यूरियोसिटी आसीबो से एक्सप्लोर करबो आ कोलैबोरेशन करबो नहीं कि हेले इफेक्टिव टीचिंग हे परबो नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मॉडर्न टीचर्स प्राइमरी रोल इज टू ए पैसेज रे मॉडर्न टीचर रो प्राइमरी रोल कोन deliver lectures effectively, help students memorize facts, facilitate learning and inspire curiosity, strictly maintain classroom discipline. ये जो strictly maintain classroom discipline एटा हला तुम्हारो कोन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जोटा मॉडर्न मेथड रे आउ फॉलो करा जाऊ नाही deliver lectures effectively एटा भी ट्रेडिशनल मेथड help students memorize facts एटा भी तुम्हारो कोन ट्रेडिशनल क्लास facilitate learning हमें टीचर इज जस्ट ए फैसिलिटेटर ठीक अछि तो लर्निंग एंड इंस्पायर क्यूरियोसिटी एटा होची टीचर रो प्राइमरी रोल ओके नेक्स्ट स्लाइड को देखो एटा पैराग्राफ रो लास्ट क्वेश्चन है 4 ରୁ 7 तुम्हारा पैराग्राफ क्वेश्चन थिला व्हाट डज द ऑथर कंट्रास्ट मॉडर्न टीचिंग विथ देखो एई केवल एई गोटे क्वेश्चन हुए तो तुम्हें पैसेज पढी थिले भी जदी मीनिंग ता बुझिनो ताले पारिबनी काहे कि कंट्रास्ट माने कोन तुमे सुनिथिबो कि कंट्रास्टिंग character his brother and him are two contrasting character माने दिजना completely different आउ तुमरो आउ कोन कहि परबा कंट्रास्ट रे तो एठी कंट्रास्ट भी से अर्थ रे कहै छी कि मॉडर्न टीचिंग कहा ठारू कंप्लीटली कंट्रास्टिंग माने अलगा तो या भीतर देखो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन ये सब मॉडर्न टीचिंग रे अछि किंतु रट मेमोराइजेशन जाकू तुमे मन रखिया पई रट्टा मारिबा एटा तुम्हारा मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग रे नाही तेनो सी इज द राइट आंसर चारिटा एक क्वेश्चन बिना पैराग्राफ पढी के हे गला मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ग्रामर रो क्वेश्चन किछि आसी पारे एमती पैराग्राफ गोटे आसीबो तुम्हारा ग्रामर स्किल भी चेक करबा पई किंतु तुमे पैराग्राफ न पढी के अटेम्प्ट करबा तथापि न आसीले पैसेज को जीव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा टाइम सेविंग करबा पई तुमको मु किछि आईडिया दोछि सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स अच्छा Our government has launched a relatively extensive set of reforms for aborigines in the country. एठी तुम यदि भलो भाबरे पढिबो सबु जाक सेंटेंस समान अछि केवल गोटे वर्ड रो स्पेलिंग अलग अछि aborigines एटा कंप्लीटली रॉन्ग अछि यदि कंफ्यूज हबो तुम ए दिटा रे हेई पारो aborigines जे तुम जानि छ वर्ड ता ठीक अछि aborigine माने इंडिजिनस जोटा प्राइमरीली सेठी अछंती ता माने कोन रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एबोरिजिन्स इन द कंट्री जो माने ऑलरेडी हम कंट्री अछंती ओरिजिनली जो माने हम कंट्री जे कोनती इंडिजिनस प्रोडक्ट माने ओरिजिनली सही कंट्री बा सही इंस्टीट्यूट बनाई छी ठीक अछि तो एबोरिजिन रो मीनिंग होची से तो एटा ही फर्स्ट ओरिजिन रो एबोरिजिन हेची तणो ए ओरिजिन रो एटा हबनी एटा हब एबोरिजिन्स ओके आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट एक्सटेंसिव कोठी अलगा ना एक्सटेंसिव सबटी समान अछि हां एक्सटेंसिव ठीक अछि बाकी तो सब समान खाली ए वर्ड ता नुवा थाई पारे तुम पे आ यार स्पेलिंग सबटी रॉन्ग ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक्स तुमरो पढुची एग्जाम ओके तो तुम ट्राई करबो जदि तुमको डायरेक्टली जाना पडुची वर्डटा ताले अटेंड करबा पय नहले हम गोटे फोनेटिक्स रा छोटा क्लास टे करबा 15 मिनिट 20 मिनिट तुम किछि किछि आईडिया पाइ करबो वर्तमान खाली क्वेश्चन टा करबा ऑफ द वर्ड रीड अच्छा हो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम वर्ड टा जानि छियो जदि तुमको नॉलेज दबे कहूची एई क्वेश्चन रे यार मीनिंग जानबा दरकार नहीं बट स्टिल WREATHE रीड ए रीड कहला बेले तुमरो टिके वाइब्रेशन फील हबो तो तुमरो एटा हबो प्रोनाउंसिएशन जदि तुम रीड कहूछ ठीक अछि किंतु आ गोटे वर्ड अछि रीथ ओके एटा होची तुमरो रीथ होची तुमरो नाउन आई होप मो हैंडराइटिंग तुम समस्त देखि परछ आ रीड एटा होची तुमरो वर्ब ओके तो रीथ होची जो तुमरो फ्लावर रो ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो कहबान ताको कॉम्बिनेशन बा तुम जो कहीं शहीद हो गले जो गोटे राउंड शेप रो गोटे फूल दिया जे तांको ऊपर किबा जो माने क्रिसमस डेकोरेशन देखिथिबो सेठी भी फ्लावर रो एंती अरेंजमेंट है अरेंजमेंट्स फ्लावर रो अरेंजमेंट को रीथ को जाय जोटा थीटा साइन रे एंड हे जिवो एटा एंड हे जाउछ तत पे एठी थीटा वाला साउंड हे जेटा थीटा तुम जो माने पढिछे फूलमाला हां फूलमाला किंतु फूलमाला और रीथ टिके डिफरेंट ए जो यूजुअली सर्कुलर अरेंजमेंट को कह जाए और रीड होची वर्ब जेमिति द माउंटेन was wreathed past tense रही गला with mist mist माने बुझछ कुड़ी होय तो पहाड़टा ता चारिपटे गुडे ही जाइतला बा ता चारिपटे कोन थिला मिस्ट थिला ओके तो रीड आउ रिथ तुम जानला आ गोटे वर्ड भी जानि था सिमिलर जोठी w साइलेंट अछि ऑलमोस्ट राथ राथ वर्ड जो माने फिल्म बहुत देखो द राथ ऑफ द टाइटन्स इंग्लिश रे फिल्म थिला ओके टाइटन तो आम कंट्री रो कोन कहंती स्क्रिप्चर रे नाही एटा ग्रीक कल्चर कहि पारो वेस्टर्न कल्चर रे तो राथ ऑफ द टाइटन्स गोटे फिल्म थिला तो राथ माने कोन कहंती एंगर सेटा भी माने एक्सेसिव एंगर राग एक्सेसिव एंगर को हमें कहि परिबा राथ ओके आकु बढ़िबा तो एटा जो एंड हे जाउची रिथ जोटा तुमरो नाउन थिला सेटा एटा कंदा रीड जो अछि तुमरो वर्ब तार आंसर बा एटा ओ जोठी टिके वाइब्रेशन हबा हल्का आ तुमे देखि पारथबो एठी एमिति मार्क ते अछि कोन कहबा डी भलिया अछि गोटे क्रॉस करा अछि ओके आकु बढ़िया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन डैश वर्किंग हार्ड ही इज वेरी पंक्चुअल एमिति इजी क्वेश्चन एग्जाम रे पढियो तो तुमे केते प्रैक्टिस करछा इजी क्वेश्चन भी तुम्हारा भूल होनी सेथरे तुम्हारा मार्क डिसाइड हो हैं तो beside decides in to तो यार आंसर हबो besides माने व्यतीत ओके besides एटा कैपिटल लेटर रे सेंटेंस स्टार्ट होची एटा हैं डैश दिया छै कि एटू सेंटेंस स्टार्ट होची besides working hard से परिश्रमी आउ से समय अनुवर्ती मते ठीक अछि besides working hard he is very punctual एटा हला व्यतीत beside माने कोन पाखरे ओके मु तो ऑलरेडी कहि देली ताले नेक्स्ट क्वेश्चन रा आंसर choose the correct preposition dash the river there is a beautiful park तो तुम्हें beside और besides रो डिफरेंस मु भाबुची आ किछि काहर कंफ्यूजन हबनी beside the river there is a beautiful park डिफिकल्ट न है एडिटा क्वेश्चन बहुत इजी थिला बस तुम्हें सिली मिस्टेक करबन एग्जाम रे बोली तुमको ए क्वेश्चन दिया छै ओके beside the river there is a beautiful park नदी पाखरे गोटे कोन अछि सुंदर पार्क टे अछि choose the correct preposition आउथरे अच्छा dash अच्छा ये डैश टा इठी अछि आरंभ रे क्वेश्चन रो स्टार्टिंग है ओके डोंट गेट कंफ्यूज्ड डैश हिज बेस्ट एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम एठी कोन हबो दो डिस्पाइट बिसाइड बिसाइड्स बिसाइड्स माने व्यतीत किंतु व्यतीत एठी लागिबो तार सत्वे तन सत्वे कोटा डिस्पाइट जाको इन स्पाइट ऑफ भी कहि परिबा ओके इन स्पाइट ऑफ बट डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम तो कोटा राइट आंसर डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स तार पूर्ण प्रचेष्टा सत्वे से परीक्षा रे असफल हला किंतु यूजुअली हबन चेष्टा कले सफलता मिले ओके select the segment of the sentence that contains a grammatical error if there is no error mark no error as your answer जदी सेंटेंस रो को पार्ट रे सेंटेंस टा एक्चुअली पूरा लिखा है छि
ए ऑप्शन पार्ट को पढ़ी कंफ्यूज हुएनी वर्तमान पाई ऑप्शन पार्ट एटा तळे यूजुअली वर्टिकली थाए एठी तुमरो हॉरिजॉन्टली अछि ओके एठी तळु तळु रहबा कथा टाइप करे वाला ओके द बोर्ड ऑफ directors of the company which recently completed their annual meeting has approved a new policy जदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सी जिंस यूनाइटेडली करूछंती यूजुअली से माने यूनाइटेडली ही करिवे काहे से माने गोटे बोर्ड बना है किछि गोटे पर्टिकुलर गोटे काम पई तेनु ताकू हमें सिंगुलर नाउन बोली काउंट करिबा एंड द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर किंतु सेंटेंस चेंज हे गला जति द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स dash divided in their opinion एठी समस्तंकर अलग अलग ओपिनियन हे जाउची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर तेनु सेठी प्लूरल वर्ब लागिबो आर लागि पारे वेयर लागि पारे ठीक अछि बहुत सिंपल जिंस किंतु एग्जाम रे पढिले हड़बडी रे भूल हे पारे तेनु तुमे बेसिक स्ट्रांग थिबो तुमरो तुमे डेफिनेटली कर पारे ओके तो एठी ताले कोन भूल थिला एते कथा मु कहिली तो एठी the board of directors of the company which recently completed their annual meeting एठी their no its board of directors which recently completed its annual meeting काहे कि ना एटा सिंगुलर हे गला तेनो its लागिवो आ गोटे सिली जिंस जोटा मु भाबुची कहार हो नथिबो its आ it apostrophe s एटा it is हैं एटा होची ओडिया रे एहार मु एटा कहबा कथा त नुहे बट होपफुली समस्त जानिछ समस्तंकर बेसिक स्ट्रांग अछि ओके the recently completed its annual meeting has approved a new policy tale ko part ta wrong thila b option b is the right answer and the wrong part of the sentence ठीक अछि next question को जिबो the students have been preparing for the annual examination since January पुणी इजी क्वेश्चन अछि एबा पढुछि तुमार बहुत एग्जाम रे एक्चुअली क्वेश्चन टेंस देखिबार अछि have been preparing अछि आ किछि कहबा दरकार नाही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस राइट यदि हैव खाली बीन थांता ताले तुमे प्रेजेंट परफेक्ट कहि थांतो आईएनजी लागि छि तेनु एथरे किछि आ एक्सप्लेन करिवार नाही राइट तो टेंस समस्त को आसुथबो एग्जाम रे पढुछि पिला माने द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन सिंस जनवरी एटा को टेंस रे छि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस द फायर डैश आ तुमे को वर्ड को रिप्लेस करिवार छि डैश रे स्टार्टेड सडनली इन द किचन लास्ट नाइट फ्रेजल वर्ब तुम्हारा एग्जाम रे सब एग्जाम पड़ुछि तुमे सेंट्रल एसएससी नियो स्टेट एसएससी नियो सबुथरे अछि तो फायर ब्रोक आउट माने स्टार्टेड सडनली ओके स्टार्टेड सडनली आ पुनी सेटा भी को अर्थ रे हबो जोटा यूजुअली कोन सडनली स्टार्ट हला समथिंग अनप्लीजेंट जोटा बहुत तुम पई सुखकर नुहे सेमिति जिंस स्टार्ट हले हठात ताको कहबा ब्रोक आउट वार ब्रोक आउट फायर ब्रोक आउट राइट ब्रोक इनटू माने प्रेजेंट टेंस रे ब्रेक इनटू फोर्सफुली एंटर करबा ये सब तुमे माने प्राय जानिथिबो आई होपफुली तुम्हारो एटा रिवीजन होछि हां एग्जांपल फोर्सफुली एंटर द थ्री थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट राइट आउ ब्रोक डाउन कोन जिंस इमीडिएटली नहीं ब्रोक ऑफ हला इमीडिएटली स्टॉप हो ओके द पीस ब्रोक ऑफ इमीडिएटली और पीस कौन कहबा जो चुक्ति हुए ठीक अछि सेटा हठात भांगी जीव युद्ध हले तनो सही क्षेत्र रे हमें ब्रोक ऑफ करबा ब्रोक डाउन भांगी जीवा अर्थ हिज व्हीकल ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द पिलग्रिमेज ऑन द वे टू हिमाचल ता गाड़ी हिमाचल गला बेले बाटे ही खराब हे गेला खराब हे जीवा अर्थ रे ब्रोक डाउन ब्रेक डाउन कोन दिन गाड़ी ब्रेक डाउन हे गेला हम ओडिया लोक तो बहुत इंग्लिश जानि तुमे इंग्लिश को काइंड डरुछु ताले नै कि तो फायर एटा हबो ब्रोक आउट आई होप तुम समस्त एटा बुझी परछो जे किछि असुविधा नाही यार आंसर हला तो फायर ब्रोक आउट ओके आकु बढ़ियो डायरेक्शन transform the tense form of the given sentence into the present perfect continuous sentence present perfect continuous tense को तुमको खाली कन्वर्ट करबार अछि इजी क्वेश्चन पडिबो टेंस से प्राय तुमको पूरा फुल मार्क आसे जेतरा क्वेश्चन पड़ते सब ठीक हबो he has worked in this office for 5 years एटा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि has प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नै कि और b3 लिख परिबो तो एबे हमको खाली प्लस गोटा है जी लगेबार अछि
सो कोटा हबो he has been working in this office for 5 years केते इजी क्वेश्चन आ 2 सेकंड रे सरीबो एते नर्वस है कि यार इंग्लिश रो एते बड़ सेंटेंस अछि सेंति भाबिबार नै आ किछ एक्सप्लेन करिया को नथिला एते हैं ट्रांसफॉर्म द टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट रे थिला खाली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कले वर्ब प्लस तुम जदी हैज और हैव बीन लागिला आ आईएनजी लागिला ओके आकु बढ़िबे last few questions the child dash her mother she is very kind and patient पिलाटी ता मां भलिया हिची कहबा जदी सेंटेंस तमे बुझिबो पढि नै कि अच्छा तो बाकी जिंस मु टिके एक्सप्लेन कर दोछि तापर तुमे भी निजे जानि परिबो आंसर टेक्स्ट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग से अर्थ रहबो जंती द बॉय टेक्स टू पेंटिंग लीजरली ता माने तार फांका समय से कोन करछि पेंटिंग करछि एटा बा टेक्स्ट टू टेक अप कोनसी टारगेट बा कोनसी टास्क कंप्लीट कर टास्क करबा अर्थ रे टेक अप ही टुक अप द चैलेंज ठीक अछि टेक इन होछि यार अनेक किछि मीनिंग तीन चारटा मीनिंग हे पारे गोटे होछि द अच्छा द लिखिबानी आई कुड नॉट take in what the teacher said माने मु बुझी पारले टीचर कोन कहिले मु बुझी पारले आई होप तमे समस्त बुझी पाउछ हैं आ गोटे she took in the stray puppy कोन stray puppy माने बुझी पाउछ तो रास्ता कड़े थिबा कुकुर छुआ ओके तो इठी टुक इन को अर्थ रे होची शेल्टर ठीक अछि घर जोगेले ताको देला तो सी टुक इन द स्ट्रे पपी बाकी सब सरी गला टेक आफ्टर मीनिंग होची कोन रिजेंबल वर्ड तो तमे समस्त जानिथिबो एका भली देखा जिबा अर्थ रे बा एका भली भलिया मीनिंग रे द चाइल्ड रिजेंबल्स हर मदर बा takes after her mother she is very kind and patient okay अच्छा गोटे फ्रेजल वर्ब जो जदी कहंती कि बापा ता पुओ भलिया है ना ओडिया रे फ्रेजल वर्ब तो मोर ढग माने पड़नी वर्तमान पई इंग्लिश रे कह जिवो जदी पुओ बापा भलिया हैला द एप्पल कलर चेंज कर द एप्पल has not fallen far from the tree माने एप्पल टा गछ थारे बहुत दूर रे पड़थिले बापा ठो अलगा है नै कि तो मंजीटा जो पड़ी कि गछ उठिछि त बापा भलिया ही एति बात करे कोन कहजिवो द एप्पल हैज नॉट फॉलन फार फ्रॉम द ट्री ओके द टेक्स्ट आफ्टर मीनिंग होछि रिजेंबल ओके हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास डैश द स्टूडेंट स्टूड अप हार्डली स्कार्सली एठी कोन लागिवो scarcely अवतार ए पार्ट आबो when hardly had the teacher entered the class when the student stood up teacher पशु पिला माने ठिया पड़े hardly I had stepped out when it started raining मु टिके बाहर को बाहर छि कि नाही वर्षा हला ओडिया रे बुझी गेल इंग्लिश रे भी कहि परिबो यदि तुमको इंग्लिश डिफिकल्ट लागु छि ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर मदर टंग गोटे टाइम पर इंग्लिश तुमको एते इजी लागिबो तुम माइंड रे कन्वर्सेशन भी इंग्लिश रे इमेजिन करियो मे बी यदि मु मोर निजर एग्जांपल और एक्सपीरियंस शेयर करबी आई यूज्ड टू डिस्कस थॉट्स इन माय माइंड इन इंग्लिश मु ओडिया डिस्कशन कर नथली मु मते से मते इंग्लिश रे या कहबे मु तांको इंग्लिश रे शेयर करबी दैट्स हाउ आई डेवलप्ड माय स्किल ऑफ इंग्लिश ओके कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश ओके तला को बढ़िया हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप हार्डली आई हैड स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग okay last 3 questions no sooner did the train arrive when the passengers rushed to board it acha find the wrong part no sooner पाखरे एबे hardly और scarcely पाखरे तुम when लागिथिला आ no sooner पाखरे कोन लागिवो than ट्रेन पहुंची कि नाही लोक माने दौडिले ताधरे चढ़िया एटा हमर जनरल बगरे नै कि
बाकी वगैरह तो लोकंकर टिकट थिबो आराम से चढ़ी नले दिवाली बेले हबो दशहरा बेले हबो ओके नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव व्हेन पैसेंजर्स एटा व्हेन लागिबो नाही एटा पार्ट रंग अछि कोन हबो देन द पैसेंजर्स रश टू बोर्ड इट ओके द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट व्हाई दे वर लेट एठी कोन रंग अछि अच्छा हो मु एक्सप्लेन कर दोछि जते बेले भी कोनसी क्वेश्चन वर्ड थिबो wh वर्ड थिबो ता पूर्वरु हमें दैट लगेबा नाही एई पार्ट टा भूल अछि यदि हमें सेंटेंस टा करेक्ट करबा खाली वी जस्ट हैव टू ओमिट दिस वर्ड ओमिट o m m i t ठीक अछि ओमिट व्हाट दैट द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर लेट एटा तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच अछि डायरेक्ट स्पीच करि परबे तुम समस्त नै कि तुम्हारा टास्क कमेंट रे लिखो ओके सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन of today's class. Hard work and honesty has always been his strength. कठिन परिश्रम और honesty सच्चोटता नहीं कि ओडिया रे सच्चोटता भी बुझी परना इंग्लिश रे भी honesty भी बुझी परना ताहले थर्ड लैंग्वेज तमरो कोन पचारले तुमे कमेंट रे लिखले हम से लैंग्वेज भी बुझिला हार्ड वर्क एंड honesty has always been his strength तो एटा कोन हबो दीटा सिंगुलर नाउन अछि एठी हार्ड वर्क भी अछि और honesty भी अछि यदि तुमर खाली honesty थाता तुमे ए सेंटेंस तो बहुत थोर सुनिथिबो कि honesty is the best policy which nobody follows nowadays नहीं कि honesty is the best policy okay तो किंतु honesty पाखरे सिना एठी is लागिला एठी hard work भी अछि और honesty भी अछि and से माने join हेचंती then we definitely have to use plural verb तो plural verb tense को चेंज न करी के हमें कोन लगेबा have ठीक अछि आउ सेंटेंस रे फाइंड द एरर अछि कनो हाज ता भूल अछि ओके सो आई होप तुम माने गुट्टे के दिटा तो नवा जिंस डेफिनेटली सिखिलो आज रे क्लास रे आउ तुमे क्वेश्चंस पचारि परिबो हम व्हाट्सएप ग्रुप रे आउ YouTube चैनल रो कमेंट रे ओके थैंक यू